power of one is the theory that one person's actions can change the lives of many. And nowhere is that more than true than in Lakhori village. This small village of roughly 3,000 people is located in Bhandara district in Maharashtra. USHA International's master trainer Varsha opened her Silai School in Lakhori after first learning how to sew and then rising to become a master trainer. She has trained many to become financially independent like herself by teaching them stitching, a means of livelihood for many women in villages across India. उषा शिलाई क्लास गावोगावी जसे घ्यायचे होते तर प्रवासाला अडचण जात होती. कुणाच्या गाडीवर जा किंवा ऑटोचं वाट पहा, त्यामध्ये टाइम खूप वेस्ट होत होता आणि पाहिजे तेवढा काम मी दिवसभरात मॅनेज करू शकत नव्हती. तर त्यासाठी मला गरज वाटली की एखादी गाडी घेतली पाहिजे. त्यासाठी मी एक दिमाग लावलाय. एका गावात प्रशिक्षण अरेंज केले आणि त्या प्रशिक्षणामध्ये फीस ठेवली. त्या महिलांकडून मला इतका नफा झालाय की मला त्या महिन्याला 60,000 रुपये मिळाले. एका महिन्यात 60,000 रुपये मिळाले. इतका आत्मविश्वास आला की नाही, आधी मी या पैशानी माझी जी अडचण आहे ती भागवणार. तर मी त्या पैशानी त्याच्यात थोडे पैसे पुरवून गाडी घेतली ॲक्टिवा आणि आज ॲक्टिवा गाडीने अशी म्हणजे जिकडे काम आलं तिकडे भरारी मारून जाते. मी खूपच सपोर्ट झालाय आणि हे मी फक्त माझ्या उषा शिलाई क्लासच्या भरोश्यावर करू शकली. नाहीतर काय ते कपडे शिवणे आणि घरात खर्च करणे एवढंच होतं. एवढा मोठा मी इन्कम एका महिन्यामध्ये कमावू शकते. आज जे नोकरीसाठी वाट पाहतात आणि गव्हर्नमेंट नोकरीवाले आहेत त्यांचा पगार पण असतो 50-60,000 रुपये, त्या लेवलवर मी आज पेमेंट कमावते. तर मला खूप म्हणजे खूप बरं वाटत आहे. Varsha has gathered many women from the village and from Lakhani Tehsil to talk about the importance of being skilled. But it isn't just skills and livelihoods that Varsha teaches. She's also talking about the importance of health for women, especially working women. She's encouraging them to come for the first ever yoga session organized by USHA in their village. मैंने सिलाई का काम शुरू करने का सोचा, इसलिए मुझे वर्षा मैडम से मिली, उनसे सीखने की शुरू की. उन्होंने हमें ब्लाउज सिखाया है, पैटर्न सिखाया, अलग अलग ब्लाउज के नेट है, कुछ कप्स वाले हैं, कुछ अलग अलग वाले हैं, वो सिखाए हैं. हमारे पास ब्लाउज आते हैं तो हम मतलब हमें कुछ पैसे मिलते हैं तो उससे हम अपने मम्मी पापा को मदद करते हैं. हमें उनको खुशी देखकर बहुत अच्छा लगता है. It's the morning of the yoga camp and the women of Lakhori are walking to the local Ayush Kendra for their first ever yoga session. The relationship of trust that USHA has built is amongst young and old alike. That's why it has only taken one call by the USHA master trainer for so many women from Lakhori and elsewhere in the Tehsil to come for yoga. While Varsha and her other associates at USHA planned for 60 women to come, an overwhelming 135 participants have turned up to register at the yoga session. That includes women, young girls and children. एक पति जब योग अभ्यास करता है तो वो क्या है, अकेले के लिए वो करता है, लेकिन एक पत्नी या एक माता योग साधना करती है तो पूरे परिवार को सुखी बना देती है. तो इसलिए आज हमें महिलाओं के लिए, माता भगिनियों को फोकस करना चाहिए योग साधना के लिए. हमने देखा है महिलाओं के लिए, माता भगिनियों के लिए योग यानी संजीवनी से कम नहीं है. From literacy to money matters, nutrition and health to livelihood, empowering a woman means empowering her family, her society, her community. Their health and well-being depends on her health and well-being. And if the woman of the house inculcates a healthy lifestyle in her children from an early age, leading by example herself, then an entire generation can be made conscious of good health.
In addition to promoting local traditions and crafts, USHA has also been working to promote local sports that may either be on the verge of dying out completely or may have faded from public consciousness. USHA wants to re-familiarize the people of India with the sports and health activities of their regions. The women of the USHA Silai School are also playing key roles in organizing, promoting and participating in these events. जीवन जीने के लिए पैसा भी जरूरी है और निरोगी जीवन भी जरूरी है। तो अपनी जीवन शैली अच्छी बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए और निरोगी रहने के लिए हमेशा जो पैसा कमाएंगे हम योग करेंगे ही नहीं तो क्या हो जाएगा, वो पैसा वेस्ट हो जाएंगे डॉक्टर के पास, औषधी के पास। आणि योगामुळे जो ध्यान साधना आहे तो ते ध्यान साधना आपल्याला जे आपले काही मानसिक तणाव आहेत शरीरामध्ये त्या ध्यान साधनेमुळे योगाच्या ते मानसिक तणाव हे नाहीसे होतात. Sharika, a master trainer from Lakhani, has travelled to learn yoga at the USHA yoga session for the very first time. She believes that yoga combats much more than just illness, and her own journey from learner to master trainer has been inspiring. उषा में आने के बाद में मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। क्योंकि मैं पहले से ये सब काम करती थी लेकिन मेरी इतनी खास पहचान नहीं बनी थी। लेकिन उषा में आने के बाद में मुझे लर्नर के बाद में शिक्षिका के बाद में मास्टर ट्रेनर की मुझे पद मिली और मेरी जो एक पहचान बनी मैडम, वो बहुत बड़ी पहचान बनी। So a good start for yoga in Lakhori. And if the bright smiles of these women's faces and their enjoyment of the first yoga session is anything to go by, yoga is here to stay, and so is the promise of a healthier Lakhori. शांतीच्या पांढऱ्या रंगाप्रमाणे मला सुरक्षित करा, शुद्ध करा. It's a cold and foggy morning at the Amatir Kanya Gurukul in Kurukshetra. As children and guests settle in to watch a keen competition, the participants gather on the ground. Everyone joins the inaugural prayer in one voice. भाग लेंगे, खेल सम्मान को बढ़ाएंगे, but will soon be cheering for different competitors. भारत माता की जय! The thrill of a good competition is in the air. The women of the USHA Silai School are ready to play. अपने शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए तो हमें ये सब खेलना पड़ता है, ठीक है। शरीर भी अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है और जैसे भाग दौड़ मतलब बच्चों वाली फीलिंग आती है। 50 kilometers from the Gurukul lies a village called Buchi. Here Kusum Devi is preparing to leave to play tug of war. She finishes all her household chores, cooks for her family, and takes her cattle for grazing before she leaves. Kusum's husband and in-laws are specially abled, and she plays a major role in providing for them. She had always believed that her life is restricted to her household, but once she stepped into the Silai School and participated in its curriculum and the sports activity conducted by USHA, her life changed. बहुत अच्छा लगा, बच्चों वाली फीलिंग आई, जैसे कि आज हम भूल गए घर पे हमारे बच्चे भी हैं, हम खुद ही बच्चे बन गए रह के। कौन में दर्द होता है, आंखों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, उसके लिए हमें ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। हमें आज यहाँ आके पता चला है कि खेलना भी कितना ज़रूरी है हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए। In Bachgaon village in Kurukshetra, USHA organized a tug-of-war competition with the help of their NGO partner Seva Trust UK to bring together these women and help them relive their childhood. तो मेरा मन था कि मैं ऊषा को द्वारा उनके साथ जुड़ूं, तो मुझे द्वारा एक जुड़ने का मौका मिला इस ट्रस्ट के माध्यम से। तो इसमें हम गांव दर गांव जाकर महिलाओं के
सिलाई सेंटर भी खोल रहे हैं ऊषा के माध्यम से, और ये ऐसी पारंपरिक जो खेलों को बढ़ावा भी हम दे रहे हैं। देखो हम अपनी पारंपरिक खेलों को भूल गए हैं, जब तक उनको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो बहुत मुश्किल है। ये ऊषा इसमें बहुत अपना योगदान दे रहा है। हरियाणा दूध दही का खाना हरियाणा, क्योंकि यहाँ लोगों में जोश होता था पहले। यहाँ पारंपरिक खेल पुराने लोग जो हम जोर बहुत होता था उनमें, तो रस्से से ही हम काम करते थे ज़्यादा, तो इसलिए जो हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा रस्साकसी का जोर रहता था पहले। तो यहाँ लोकल खेले हैं रस्साकसी हमारी। Research suggests that the tug of war's inception in India dates back to the 12th century AD in the region now known as Odisha. In fact, there is even a stone relief depicting a tug of war match in full motion on the west wing of the Sun Temple of Konark. Tug of war was part of the Olympics from 1900 to 1920, and the sport is now lobbying to be included once again. Regardless of what happens on the world stage, at the grassroots level is where its popularity needs to grow. And that is USHA's active focus on bringing these sports back into public consciousness and increasing local interest in them. हरियाणा की भूमि ऐसी रही है, हरियाणवी शब्द एक बोले जोटे को भी उठा के पटक दिया करते थे हरियाणवी लोग, लेकिन आज वो लोग नहीं रहे, क्योंकि उनका खान पान सब कुछ चेंज हो गया है। और कहीं ना कहीं इसको दोबारा लाने के लिए, इसी पोजीशन को दोबारा लाने के लिए रस्साकसी जैसे और कबड्डी कुश्ती जैसे खेलों को दोबारा ग्रामीण स्तर पर लाने के लिए एक दृढ़ संकल्प की जरूरत है। Any sport, regardless of its nature, organically unites people. In the case of local sports, sports is a way of uniting communities. In bringing together these women out of their houses, away from their chores, to experience the simple pleasures of life. USHA is helping break gender biases. As the hands of these women firmly grasp the heavy jute fibers of the rope and they pull for their lives, but with a smile on their face. It is clear that given the opportunity, not only can women do anything, but in strengthening their hand also lies the growth of their family, their community, and eventually the country. अपना जोश दिखाया और विजयी हुए। Silambam players from across Puducherry gathering for competition. The event, supported by USHA, drew over 100 passionate children who braved the rains for the chance to fight each other with bamboo sticks, quite literally. Everyone has to learn Silambam as well as gymnastics to protect themselves from the enemies as well as to the bad person. I want to be a national player. Silambam was good for health. Dharani Dharan was the popular choice to win the Silambam championship in the senior category, lost out to Nanda Govind. It was this Nanda Govind, a class 11 student, who lifted the championship. எனக்கு பிடிச்சிருக்கிறது காரணம் எங்கள் முன்னோர்கள்லாம் கற்றுக்கினாங்கன்றதுனால இதை நான் ரொம்ப வருஷமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன். அதனால தான் என்னால் இதை இப்போ கோல்டு அடிக்க முடிஞ்சது, சாம்பியன் ஆக முடிஞ்சது. எல்லோரும் விளையாடுறத பார்த்து அவங்களுமே நான் விளையாடணும், நம்மளை பார்த்து எல்லோரும் பேசணும், அந்த ஒரு இது மோட்டிவேஷனில் தான் எனக்கு இந்த ஆர்வம் வந்தது. The senior category for women saw a future mathematics professor take on an IAS aspirant. Bhagya Lakshmi, who wants to become a professor, struck gold, while IAS aspirant Arulvizi says it was worth the fight. இது வந்து அழிஞ்சிட்டு வர கலை நம்ம வந்து வளர்க்கணும். இது வந்து சும்மா ஒரு கலை மட்டும் இல்லை, இது வந்து பெண்களுக்கு ஒரு தற்காப்பு கலை. இது கேர்ள்ஸ் வந்து ரொம்ப இப்போ எவ்வளோ பேர் கற்றுக்குறாங்க எவ்வளோ வயசில். இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் தான். அடிமுறை அம்சம் தான் சொல்வேன். ஏன்னா அதில் விளையாடும் போது தான் நம்மளோட ஃபுல் எனர்ஜியை காட்ட முடியும். ரொம்ப
அதை நான் விரும்பி பண்ணுவேன். ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும். எங்கள் தாத்தாவும் எங்கள் அப்பாவும் நான் செஞ்சதை நேரில் பார்த்ததில்ல. Silambam, a self-defense martial art using a cane or a stick, was practiced in neighboring Tamil Nadu as early as 4th century BC. It had even become part of the ancient military. However, over the years, it lost its charm as modern sports drew public fancy. Now the sport is making a comeback. இன்றைக்கி நம்ம யாருக்கும் போருக்கு போக போகிறதில்ல, போய் அங்கே 100-200 பேரை எதிர்த்து சண்டை போடுறதில்ல. இன்றைக்கி யாரை எதிர்த்து சண்டை போனால் நம்மளை எதிர்த்து தாக்கக்கூடிய நோய் கிருமிகளை எதிர்த்து போராடுறதுக்கு இந்த சிலம்பம் வந்து மிக 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 அவசியம். Silambam matches are held in 2 rounds. The first 90-second solo demonstration judged on the basis of style, posture and speed. The second, a 3-minute clash with an opponent with a break in between, when participants are judged on technicalities including touches. Dr. Bhaskaran, a physician trained in Silambam for 5 years. He pitches in as a referee now, even as he practices medicine. You have to be a quick thinker. You have to avoid all the hits. Yeah, you have to be fast on your feet. Actually, you have to be fast on your feet, and you have to be a sportive person. You don't take the hit and stay still. You have to be very mindful when you are playing here. Constant activity to the brain slows the brain aging process. Aging process is slowed. So the Alzheimer's, Parkinson's disease are delayed. The meet drew a large number of participants from the outskirts where children face a dearth of Silambam coaches. Many want the Puducherry government to follow the Tamil Nadu model. Silambam is a school game with training and practice facilities during school hours, besides incentives in the form of college admissions and job opportunities. Now, there is hope that their wish could come true. கட்டாயம் நாம் வந்து தமிழ்நாட்டில் அது எப்படி அதை கொண்டு வந்தாங்களோ அதுபோல் நம்முடைய ஐயா ரங்கசாமி கிட்ட சொல்லி அந்த நம்முடைய தமிழ் பாரம்பரிய விளையாட்டான இந்த சிலம்பு கலையை வந்து ஸ்கூலில் கொண்டு வரதுக்கு வந்து நாங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் கொண்டு வரதுக்கு நாங்கள் வந்து அதுக்கான ஏற்பாடுகள் நாங்கள் செய்வோம். USHA is committed to reintroducing long-forgotten sports amongst the people of the region. And a key role in this revival is played by the women entrepreneurs of the USHA Silai School. In Puducherry too, the women participated with great gusto, many even taking a day off work to pitch in with organizational support. இது நம்ம பாரம்பரிய கலை இது வந்து அழிஞ்சிடக்கூடாது. மெயினாக வந்து இது அழிஞ்சிடக்கூடாது. நம்ம வந்து இந்த பிரதம மந்திரி மூலமா இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்துறதுனால நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகும். இப்போ இருக்கிற காலத்தில் லேடிஸ் பசங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. இந்த மாதிரி கலையெல்லாம் கற்றுக்கிட்டாலே உடம்புல இருக்கிற எல்லா வியாதியுமே போயிடும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது சார். இப்படி இருக்கும்போது இது வந்து 1 hour வீக்லி கூட ஒரு 2 hours அதுமாரி ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணும்போது இது வந்து டிப்ரெஷனும் குறைய. Some USHA moms, as they are fondly called, also got their children trained in Silambam and sent them to prove their mettle with the stick. What Pungathai could not do, she wants to ensure her daughter can. நம்ம தைரியமா இருக்கணும்னு தோணும். நம்ம எப்பவுமே இந்த சிலம்பத்தை விடக்கூடாதுன்னு தோணும். From Malakam to Satolya and Thangta to tug of war, USHA has partnered with local NGOs to help give life and shape to its vision of traditional regional sports throughout India. In Ariyanguppam, no one conducting a Silambam competition like this. So USHA Silai take a good effort and put a more opportunity for the people in Pondicherry district. This is very helpful for Pondicherry children. Encouraged by the positive response from Silambam trainers, aspirants and parents, USHA has drawn up a plan to make this championship a regular part of Puducherry's sporting calendar. While supporting this Kadam one-day event, it will motivate the organizer as well as the participant to take this as a better event, so that they can able to understand the importance. They can pursue in further level. There is certainly a new wave of interest in Puducherry to revive the ancient Dravidian martial art of Silambam.
USHA hopes that the enthusiasm shown by youngsters and parents alike will help put Puducherry firmly on the Silambam circuit of India.